Good afternoon, students. So let us start. First of all, we have completed the lesson. So let me know that if you have any doubt, you can ask. So anybody, if you have doubt regarding this previous lesson, that is some natural phenomena. So if you have the doubts, you can ask. Students, just questions related to the some natural phenomena or doubts if you have, you can just ask. Otherwise, we will go for the next lesson. Okay. Students, and also I have given you the question answers, I think. If not, I will give you the question answers also. Okay. So, anybody, if you have any doubts, you can ask regarding the lesson. That is some natural phenomena. And if you not have any doubt, so we can start with the next lesson, that is light. Okay. Next lesson, light. Okay. So, students, let us start now for the next lesson, that is light. Okay. So, students, you know that whatever the things, whatever the scene, whatever the things or scenic beauty that we see, or that is only possible when we see the things when it is visible to us, and the things are also visible to us because of the light, the source of light. That is very, very important. Due to the light, it falls on the things, and the things are visible to us, and we can see the things, and we can again means we can imagine that the things around us. Okay, so it gives us immense pleasure by seeing the things, beautiful things around us. Okay, the things which are around us, the people which are around us, our friends which are around us. So we can see them, we can talk to them, isn't it? So this is very important for us, the light. Okay. So this helps us in so many things. Now, so again you can see that one question is there that what only for us, for the human beings, there are the organs, that is the eyes. These eyes help us to see, isn't it? That means everything is there. Light is there, scene is there, beauty is there. But again, for us, our eyes are the organs that help us to see. That is also very, very important. You can just imagine that the people, those who are visually challenged, those who don't have the eyes, or they are blind, you can imagine that what sort of feeling they might be having, because they can't see everywhere, it is only just dark, isn't it? So these eyes are also very important. They are delicate part of our body, isn't it? And we should be very careful. We should take care of our eyes also, because it is very delicate part, very important part of our body. Then you can also see that light, it is a form of energy, and it is always emitted or given out by the luminous objects, isn't it? Last year also you have learned there are two types of
material or two types of objects, luminous objects and non-luminous objects. So, luminous objects are the source of light. For example, torch, sun. Sun is the ultimate source of light. It is also luminous. Then, luminous में sun है, then torch है, candle है, bulb है, light है, etc. etc. These are all luminous objects. Then non-luminous objects like chair, table, book, duster, isn't it? Then these are all non-luminous objects. Now, what happens when we see the light, when we study about the light? These light that comes from the source, comes from the luminous object, falls on the non-luminous object, and then this non-luminous object reflects the light and we are able to see. Until and unless the light is there, we will not be able to see, isn't it? If light is not there, it is impossible to see. Then this light, the source of light that falls on the object, these objects are non-luminous. When it falls, then it reflects the light, falls on our eyes, and we are able to see the objects. Okay. So, dear students, these reflection is the another term in the light. So, because of the reflection, again we are able to see. तो ये दो अलग अलग चीजें हैं. See, now for example, I can see the tube light, but we can't say that tube light is reflecting. I can see the sun, but we can't say that sun is reflecting, isn't it? Because it is giving the light. But when that light falls on any other substance which is polished or very much plain, that object reflects the light and that we can call it as a reflection. For example, water. जब ये सनलाइट या लाइट ट्यूबलाइट का लाइट वाटर में गिरेगा, वाटर रिफ्लेक्ट करेगा हमारे आईज में, and then I can say that water is reflecting the light. Isn't it? We can't say that sun is reflecting. So remember that these are all luminous objects that give the light. We can see the light. We can't call it as a reflection of the sun. Okay. But when it falls on any polished surface, any plain surface, then that surface can reflect the light. और ये प्रोसेस होते समय, ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होते समय, रिफ्लेक्शन में बहुत बार डायरेक्शन चेंज हो जाता है लाइट का. फॉर एग्जाम्पल, अभी when I am in the room, okay, when I am in the room, sunlight is outside, but if I want to get the sunlight, तो मैं वहां पर एक मिरर रखूंगी, वहां से मिरर से यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा. बहुत बार हम लोग देखते हैं, खेलते हैं, isn't it? बाहर जाके मिरर लेके खेलते हैं, अंदर में फिर वो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है. सो द लाइट ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन the part of the light changes and that is called as reflection. Okay, so these are all due to the light. Now in this chapter first we will see that the laws of reflection, process of seeing and the structure of eyes. यानी laws of reflection में light कैसे reflect होता है. Second thing about our eyes, because eyes are the very important organs that makes us unable to see. And next, how are we able to see? Then last
is the structure of the eye. So students, let us start first about the laws of reflection. Laws of reflection. So there are two laws of reflection. There are two laws of reflection. So the first one, now here, so I told you about the reflection also, isn't it? Reflection में क्या होता है कि लाइट का पाथ जो है वो चेंज होता है, या we can say that the angle of the reflection also changes, the angle of the light changes, isn't it? Now here, so first about the reflection. For example, here is the mirror and this is the candle. The light falls here and now here. So in these, now students, everyone just listen carefully. Okay, everyone just listen carefully. Now here, reflection. First few terms we will just see here. Now, the lit candle is there, the ray of the candle falls, the ray of the candle falls here on the mirror. और रे कैसे फॉल करना है वो भी बिल्कुल आसान है. सी इतना पूरा कैंडल, इफ यू वांट टू टेक द एंगल ऑफ द रे, देन हम पूरा लाइट का एंगल नहीं ले सकते हैं, तो एक लाइन यानी कि रे का एंगल लेना है. सो इट इज वेरी इजी. व्हाट वी कैन डू इज वी हैव टू जस्ट कट द कार्डबोर्ड हियर और एक यहाँ ऐसे होल बना लो और यहाँ पर आप एक टॉर्च लगा दो. So what will happen? Only जहाँ पर होल है वहीं से लाइन पास होगा, because last year you have learned that light always travels in a straight line, isn't it? तो इसके लिए हम यहाँ कार्डबोर्ड रखेंगे जिसमें से एक होल बनाया है, तो होल में से सिर्फ एक रे पास होगा, लाइट का एक सिर्फ रे पास होने वाला है. तो जिस सोर्स में से लाइट, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, द सोर्स ऑफ लाइट, सो द लाइट passes from the source of light is called as a ray of incident. क्या कहते हैं उसे, या फिर हम इसे कह सकते हैं इंसिडेंट रे, रे ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट रे. व्हाट इज इट कॉल्ड? इंसिडेंट रे, क्योंकि ये यहां पड़ने वाला है इसके ऊपर. ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंसिडेंट रे ऑन द मिरर. तो जैसे ही ये मिरर में फॉल होगा, मिरर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, उस लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है. सो दिस रे विच इज रिफ्लेक्टेड
after falling it on the mirror is called as the ray of reflection, reflected ray. Anyone you can say reflected ray. It is called as reflected ray. Understood now? Is it clear? So अभी ये दो चीजें याद रखो. The ray coming from the source is called as incident ray, or ray coming from the mirror. This is mirror. We can draw one line also. This is mirror. The ray coming from the mirror is called ray of reflection or reflected ray. ये समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया है क्या? ये रे जो पास हो रहा है सोर्स में से उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो मिरर से निकल रहा है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे. हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? हैव यू अंडरस्टूड? इज इट क्लियर? हाँ. सो नाउ नेक्स्ट स्टेप. सो ये जो है दिस पॉइंट जहां पर वो गिरा है, जहां पर वो पॉइंट, जहां पर ये रे मिरर पे गिर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. Called as the point of incidence. Okay, is it clear? The point of incidence. Now, ये जो लाइन परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन दोनों के बीच में है परपेंडिकुलर, इट इज अ इमेजिनरी लाइन, है ना? एक लाइन ऐसे जा रही है, एक ऐसे, तो बीच वाली जो लाइन है ऑलवेज the 90 डिग्री एंगल जिसके साथ बनता है मिरर के साथ, that ray is called as normal. उसे कहते हैं normal. That is called as normal. It is always perpendicular to the mirror. ऐसे गिरने वाला मिरर के ऊपर बिल्कुल. Okay, so that ray which is in the middle, the ray which is perpendicular is called as the normal. Okay, then now here angle of incident, ये जो ray of incident हुआ है और ray of reflection हुआ है और बीच में गया है हमारा normal, तो normal के उस तरफ है angle of incident I, और नॉर्मल के इस तरफ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R. स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. ये जो हमारा नॉर्मल है जो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल के उस तरफ है एंगल ऑफ इंसिडेंट. एंगल ऑफ इंसिडेंट. एंगल ऑफ इंसिडेंट. And this is I, और ये है R, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये जो है नॉर्मल से लेके यहाँ तक ये है हमारा R, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और नॉर्मल से यहाँ ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस. Understood? Is it clear? ये रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है, listen here everyone, once again I am explaining. रे इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये रे, ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल
उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अंडरस्टूड नाउ? एंड हियर according to the first law, angle of incident is equal to angle of reflection. Angle of incident is equal to angle of reflection. So now ये हो गया terms. Now I will show you according to the first law. I will show you the first law how it is proved. Okay? तो हम अभी first law को prove करेंगे. Students, are you sitting with your textbooks also? Sit with your textbooks also. Practically I will show you, but still you have to sit with your textbooks also. Remember that. संध्या, एंगल का स्पेलिंग क्या लिखा है तुमने? संध्या. Okay. So listen here, students. Now, now we will prove that angle of incidence is equal to angle of reflection. Okay, angle of incidence is equal to angle of reflection. So again, I think just wait for a minute. Okay, so students, now just listen here, because I have made the arrangement that you can just see the whatever the experiment we are doing. Okay, so listen carefully. Now here, the first law is that first law of reflection, that is, I told you the first law of reflection, angle of incidence is equal to angle of reflection. ये हमारा फर्स्ट लॉ है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, नाउ वी हैव टू प्रूव इट. ये हमें प्रूफ करना है, तो हम कैसे करेंगे? सो जस्ट लिसन हियर. हमें क्या करना है? एक ऐसे मिरर लेना है. ओके, सो एवरीवन जस्ट लिसन केयरफुली. नाउ फॉर एग्जांपल, so once again I have to keep it here like this, so that on the table. Okay, now yes, you can see that. Okay, just to see here,
you have to just observe this. Okay, इसमें हमें क्या करना है? First of all, you have to just, we are going to prove the first law. The first law is angle of incidence is equal to angle of reflection. ये हमें prove करना है. So for that we are going to take one mirror. Okay, just I am showing you how it is. Okay, for example ये हमारा mirror है mobile. This is the plain paper. ओके, जस्ट अ प्लेन पेपर, और ये हमने मिरर को यहाँ लगा दिया है. ओके, द मिरर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, मिरर के नीचे है हमारा प्लेन पेपर. रिमेंबर दैट, मिरर के नीचे क्या है? प्लेन पेपर है. नाउ एक काम हमें करना है कि जस्ट वी हैव टू टेक द टॉर्च एंड उसके सामने हमें रखना है. So for getting the ray of the light, we have to make a hole to the cardboard. Okay, तो यहाँ पर for example हमने ये टॉर्च लिया है और यहाँ से एक रे पास होगा. Okay, I am keeping the torch here in front of the mirror, यहाँ पर सामने. Now instead of that, just remember, for example I am taking one chalk that showing the ray और यहाँ ऐसे लगा दिया है. ओके, torch, this is the torch. When the ray passes here, okay, when the ray passes to the mirror, it will get reflected. तो एक ऐसे आएगा और रिफ्लेक्ट होगा ऐसे. Now you can just see, यहाँ से reflect होगा. We want to know the angle, that is why we are not going to keep it straight. We are going to prove that angle of incidence is equal to angle of reflection. तो हम उसे सीधा नहीं रखेंगे, हम थोड़ा सा एंगल बनाएंगे. ओके, वी आर जस्ट गोइंग टू मेक द एंगल. तो अगर हम उसे इस तरह से रखते हैं, थोड़ा सा इधर, नॉट एग्जैक्टली द मिडिल. वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट हियर, वी आर गोइंग टू टेक दिस साइड. यहाँ पर टॉर्च लगाएंगे, यहाँ से रे पास होगा मिरर में, मिरर को टच करेगा और रे यहाँ से ऐसे निकलेगा. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल नाउ द सेम, जो रे यहाँ गिर रहा है उसको हम यहाँ पर मेजर करके ऐसे यहाँ पिन अप कर देंगे. ओके, पिन लगा देंगे क्योंकि हमें ये जो है ये रे दिख रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर से पिन लगा दिए फॉर एग्जाम्पल. और फिर ये हमारा नॉर्मल है और इस तरफ जो ये रे निकल रहा है उसको भी हमने सपोज यहाँ पिन लगा दिए हैं. ओके, फिर हम इस पेपर को ऐसे उठा लेंगे. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, नाउ आई विल शो यू. सपोज दिस इज द पेपर. ये ऐसे टॉर्च रखा था, यहाँ से लाइट यहाँ गया है और ये हमने मिरर लिया था, यहाँ से लाइट ऐसे निकला है. दिस इज, यू सी द एंगल. एवरीवन, यू सी द एंगल स्टूडेंट्स. ये जो डायरेक्शन दिया है ये है हमारा इंसिडेंट रे और ये एंगल देखो, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे. नाउ सी द एंगल. अभी समझ में आ रहा है तुम लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये जो इसमें से निकल रहा है टॉर्च में से, वो है हमारा रे ऑफ इंसिडेंट और मिरर में से जो निकल रहा है वो है हमारा रे ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, और ये बीच वाला जो है वो नॉर्मल, दिस इज एन. और फिर हमने ऑलरेडी उसको पिन लगा दिए थे और पिन को हमने स्ट्रेट ऐसे जोड़ दिया है. जब हमने एंगल लिया था तो पेंसिल से उसको जोड़ दिया है. जोड़ने के बाद ये बीच वाला जो है वो नॉर्मल है और अभी हम प्रोट्रैक्टर से जस्ट we will, what we are going to see, we are going to measure it. मेजर करने के बाद पता चलेगा कि दिस एंगल
I is equal to angle R. आप घर में भी इसको कर सकते हो. इट इज वेरी सिंपल. प्लेन पेपर लेके रे के लिए तुम्हें क्या पूरा टॉर्च नहीं लगाना है. टॉर्च पे यहाँ पर ऐसे एक कार्डबोर्ड है. कार्डबोर्ड में ऐसे सिंपल छोटा सा होल बना देना और उसमें से रे पास होगा और फिर थोड़ा सा ये एंगल में ले लेना. रे पास होगा, मिरर को हिट करेगा और रिफ्लेक्शन भी देगा. सीधा नहीं रखना कभी भी, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्रूव दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो इससे हम ये प्रोट्रैक्टर लेके जब मेजर करेंगे देन वी विल गेट इट दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? So this is the first law. This is the first law, and the first law says that angle of incidence is always equal to angle of reflection. ये पूरा याद कर लेना है. ये laws है, ये change होते नहीं हैं. These laws are not going to change. इसीलिए इसे आप पूरा याद कर लेना है. Understood now, students? So angle of incidence is equal to angle of reflection. Okay? Is it clear? तो ये आपके एक्टिविटी बुक में भी लिख लेना है. The first activity, write it down. That is your homework. Is it clear? Everyone have understood? Then we will see the second one tomorrow. Just I will show you the second law. How to prove the second law. The second law is that the ray of incident, the normal and the reflected ray, यानी कि ये तीनों they lie on the same plane. हमारा second law है. Second law of reflection ये बताता है कि the reflected ray, the normal, the incident ray lies on the same plane. They both this all lies on the same plane because this is all two-dimensional, so it lies on the same plane. Okay, understood now? Is it clear? So tomorrow read it again. The second law we are going to prove. थोड़ा सा read कर लेना है. Okay, and then commit. So this was our first law. And tomorrow we are going to see the second law. So thank you students for tomorrow, and write the first activity in your notebook. Write down the first activity in your notebook. You have to write it down. Okay? So thank you students.